वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज के एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 9th एंड 10th। सो नाउ क्वेश्चन 9th। फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर A इक्वल टू यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K एंड वेक्टर B इक्वल माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J minus unit vector K. Find the unit vectors in the direction of vectors vector A plus vector B. So now solution. Given vector A equal 2 unit vector I minus unit vector J plus 2 unit vector K and vector B equal minus unit vector I plus J unit vector minus unit vector K. Now vector A plus vector B equal 2 minus 1 unit vector I plus minus 1 plus 1 unit vector J plus 2 minus 1 unit vector K equal unit vector I plus 0 unit vector J plus unit vector K means unit vector I plus unit vector K. Now unit vector in the direction of vector A plus vector B equal 1 upon modulus of vector A plus vector B into vector A plus vector B. Now modulus of vector A plus vector B equal under root 1 square plus 1 square equal root 2. Now required vector equal 1 upon root 2 into
unit vector I plus unit vector k equal 1 upon root 2 unit vector I plus 1 upon root 2 unit vector k. This is the solution. Now question number 10. Find a vector in the direction of vector 5 unit vector I minus unit vector j plus 2 unit vector k, which has magnitude 8 units. So now solution. Given vector 5 unit vector I minus j unit vector plus 2 unit vector k. Now we have to find unit vector in the direction of vector 5 unit vector I minus j unit vector plus 2 unit vector k. So modulus of given vector equal under root 5 square plus minus 1 square plus 2 square equal under root 25 plus 1 plus 4 equal under root 30. Now unit vector in the direction of vector 5 unit vector I minus unit vector j plus 2 unit vector k equal 1 upon modulus of given vector means root 30 into given vector means 5 unit vector I minus unit vector j plus 2 unit vector k. This is the unit vector which has magnitude equal 1. We have to find the vector which has magnitude 8 and in the direction of the vector given. This unit vector is in the direction of the given vector and have magnitude 1. So, required vector equal 8 into unit vector means 1 upon root 30 into 5 unit vector I minus j unit vector
प्लस 2k यूनिट वेक्टर इक्वल 40 यूनिट वेक्टर I अपॉन √30 माइनस 8 यूनिट वेक्टर j अपॉन √30 प्लस 16 अपॉन √30 यूनिट वेक्टर k. This is the required vector which has magnitude 8 and in the direction of given vector. ना क्लास होगा वीडियो से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स के सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदर वीडियोज के लिए चिंतामणि क्लासेस 585 की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। खुश रहिए। थैंक्स।